हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी इस सीरीज एक्सप्लोरिंग कनाडा में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम यात्रा कर रहे हैं उन जगहों की जहां से वेस्ट कनाडा का ओरिजिन स्टार्ट हुआ, उनके कारण और उनके बनते और बिगड़ने की कहानी। और साथ ही हम कवर करेंगे आज कुछ हेरिटेज हाउसेस जो कि 1860, 1890 या 1900 के आसपास के हैं और काफ़ी खूबसूरत। उन्हीं में से एक घर जो कि काफ़ी फेमस है, वो आजकल सिटी ने बाय कर लिया था और उसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। ये सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। खास तौर से जगह तो हम देख ही रहे हैं, कुछ अच्छी फोटोग्राफी और सुंदर सुंदर कॉलोनीज देखते हैं, साथ ही थोड़ा सा हिस्ट्री का टच होने से थोड़ा सा कनेक्टेड फील करते हैं, अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच गए हैं कोलंबिया स्ट्रीट, जो कि न्यू वेस्टमिनिस्टर की सबसे पुरानी बिजनेस स्ट्रीट हुआ करती थी। इसके दोनों तरफ बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर और सलून, जिसको हम इंडिया में पब बोलते हैं, दर्जनों की संख्या में थे। गोल्ड रश से कमाया हुआ सोना, पाया हुआ सोना वो लोग यहाँ पे लाके जमा करते थे। यहाँ बैंक वगैरह काफ़ी थे खुले, और साथ में यहाँ पे प्राइवेट ट्रेडर जो कि सोने का वेट करके आपको डॉलर्स दे दिए करते थे। तो उसके बाद डॉलर जब कमाए तो उसको खर्चना भी है, तो यहाँ पे सलून वगैरह बहुत थे, बहुत पब थे, बड़ी हैपनिंग जगह हुआ करती थी। दोनों तरफ होटल, सलून और बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर। ये उस जमाने में खुले थे जब ये वेस्ट कनाडा की सबसे अमीर सिटी के अंदर से भी कह लो कि सबसे ज्यादा पैसा उस टाइम यहीं पे उड़ाया जाता था। तो फ्रेंड्स, अब मैं खड़ा हूँ इरविन हाउस के सामने। 1865 में ये घर कंप्लीट हो गया था बनके, और इसको बनाने वाले थे कैप्टन विलियम इरविन, जो कि एक बोट कैप्टन हुआ करते थे। फिर उन्होंने कंपनी बनाई। गोल्ड रश को कैश करने के लिए, उनके गोल्ड रश के आदमियों को ले जाने और लाने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक शिपिंग कंपनी चलाते थे। और उसके बाद उन्होंने सबसे प्रोमिनेंट घर अपने टाइम का ये बनाया। आप इसका आर्किटेक्चर देखिए कितना शानदार है और ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन। 1865 का मतलब आप ऐसे लगा लो 150 साल से भी पुराना मकान है, बट स्टिल इन गुड कंडीशन। सिटी ने इसको म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट किया हुआ है। अंदर से इसको जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसके अंदर रियल गोल्ड, मेटेलिक गोल्ड का वॉलपेपर भी है, जो कि इन्होंने फ्रांस से मंगवाया हुआ, लगाया हुआ है। बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा म्यूजियम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं अंदर से, ठीक है। पुराने घरों में घरों के चारों तरफ बरामदे हुआ करते थे, कितने सुंदर लगते हैं। आजकल के जितने भी नए मकान हैं उनमें कोई आउटिंग, बाहर बैठने का कोई सिंपल सा। आजकल के घर तो ऐसे लगते हैं जैसे शू बॉक्स। चलिए अंदर तो थे। Welcome, come on in. Come on in. I'll get the door behind you. Yeah, they're shipping Okay. on the waterfront. Come on in. Yeah, come This here. is Captain William Irving. Yeah, so he was from Scotland, and in Scotland he became a sea captain.
He eventually ended up in the United States, in Portland, Oregon, to be specific. Yeah. And he became a riverboat captain in the United States. And this is where he met his wife, who's pictured over here. Her name is Elizabeth. Elizabeth Dixon, her name was. And they had 5 children together, 4 daughters and 1 son. Now down in Portland, he was so successful that there's still a part of Portland called Irvington after him. Well, we were the capital of British Columbia at the time, but also it was the end of the gold rush. Extremely popular. People started calling him King of the River. So he was King of the River here for about 7 years, and then he got quite ill and he got double pneumonia and he passed away. Can you tell me something about this metallic wallpaper? Yes, so we believe that this metallic wallpaper was imported from France by Mary, because when Captain Irving had this house built, he had all the walls plastered white. Anyway, when she moved in, she wanted to make it her house. But it's kind of an interesting piece of wallpaper that I'm going to show you. Right here? Yeah, just it's right here. I can see that. Spectacularness of it. It's like copper. Yeah, glittering. It's like copper. Glittering like wool, yeah. Yeah. Okay. So what I like to make a little story. And I like to think that she was looking through the wallpaper book and said, I want a piece of that. Right? Okay. So he gave her a piece of it. Wow. But that's my So story. initially, okay. I don't know if it's true. So this is known as, that other room is known as the small parlor. This room is known as the large parlor, okay? So this room was used more often for family gatherings, parties, that kind of thing. So that's why the carpet is more worn in this room. Okay. Because it was used more often. Okay? So quite a few years. Beautiful. This is really beautiful. That mirror is a wedding gift to Mary when she got married to Thomas Briggs. And you should be able to see 3D. So we're looking at the back of a piano that came here from Toronto in 1890. Woodwork. So that's a bit more of an inch. Okay? Nice. So we're going to go on upstairs next. Go ahead. Of a robbery that happened in 1896. So we're going to go in the main bedroom first. So as you can see, the main bedroom is connected to this room by the nursery. Here. This other door you see is actually a closet. Now closets are extremely unusual for the time period. It's what we call the girls' even beds. So under the bed, of course, is a chamber pot. So this is John in the kilt here. You know, the treadle? Yeah, I know. Yeah. We definitely think that Mary's son's, I don't know why the attic is open, but it's open, was used for storage. Oh, yeah. She opened up 2 bedrooms back here, one here and one down there. She also made this linen, and then bathroom came in 1906, okay? So the kitchen, the heart of the home, and just to put you in perspective, the plumbing you see on the ceiling is for the bathroom. So we're right underneath the bathroom, okay? So the kitchen, of course, is where all your lovely food comes from. And so this works on suction power, like this. Oh. How old is this one? So this is about turn of the century. Oh my God, you in 1900? About 1898. So that is an ice box. So you put ice in it to make the inside cold. So if you see here, inside is a tin box. And that's where you'd put the ice. And all the tin, the whole thing is lined in tin. So the tin would get cold. And then in here is where you put the food, right? So where were they getting the ice then? From the river. From the river, oh, okay. Yeah, so to mixes and stuff like that. And I believe Ridgeway still sells tea.
have smoke their cigars, drink their brandy, talk politics, that kind of thing. Americans, of which this is a photograph of. The ones that are circled are the ones that we have. This is I the can put one. it under the light. When you're done.